Good afternoon, class. Today I will teach you a new topic, that is uveitis. Start from the introduction. Uveitis, it is an inflammation of the uvea. In the 20th century, it referred as a ophthalmia, a pigmented layer which lies between the inner retina, outer sclera and the cornea, and it consists of middle layer of pigmented vascular structure of the eye, which include the iris, ciliary body and choroid. Next one is definition. It is a general term which describe a group of inflammatory disease that produce swelling and destroy the eye tissue. Firstly, it will slightly reduce the vision of the person, that it leads to chronic vision loss. And uveitis not only limited to the uvea, but it also affect the other parts of the eye. Here you can see in this picture, this is the good eye and this is the red one is the eye with uveitis. Next, types of uveitis. There are 4 types of uveitis. First one is anterior uveitis. Second one is intermediate uveitis. Third one is posterior uveitis. And last one is pain uveitis. One more types, that is infective uveitis. First one is anterior uveitis. It is often referred to as iritis because it affects the iris, and the iris, it is colored part of the eye near the front, and it is most common type of uveitis but least serious type of uveitis. ये uveitis का सबसे common type है लेकिन least serious type है, यानी कि ये बहुत ही serious form का uveitis नहीं है. It include 2 parts. First one is iritis, that include inflammation of anterior chamber and iris, and second one, that is iridocyclitis, which is the inflammation in the ciliary body. Next type is intermediate type. Intermediate, it involves the middle part of the eye and it is also called iridocyclitis, and it is also a part of anterior uveitis. And the word the word intermediate in name refers to location. जो इसमें intermediate जो word दिया गया है, ये location को बताता है, ये किसी भी तरीके से severe inflammation की severity को नहीं बताता. Intermediate यहाँ पे जो word use किया गया है टाइप्स में, उसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर उसका लोकेशन को बता रहा है कि ये मिडल पार्ट में होता है, ये उसके इन्फ्लामेशन की सिवियरिटी को नहीं बता रहा है. एंड द मिडल पार्ट ऑफ द आई इंक्लूड पार्स प्लाना, दैट इज द फ्लैट पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी, एंड नेक्स्ट इज विच इज पार्ट ऑफ eye between the iris and choroid. So overall, intermediate uveitis, it is the middle part of the it involves the middle part of the eye and it is also called iridocyclitis. It is also known as pars planitis, and it consists of vitritis, that is inflammation of the cells in the vitreous cavity, and in this intermediate uveitis there is deposition of inflammatory material in the pars plana, and the inflammatory cells looks like a snowball in the vitreous cavity in the case of intermediate uveitis. Next one is posterior uveitis. It involves the back of the eye and it is also referred as choroiditis because it affects the choroids, and the tissue and blood vessels of the choroids are important because they deliver blood to the back of the eye. choroid क्यों important होते हैं? क्योंकि ये जो बैक पोर्शन है आई का, उसको क्या करते हैं? ब्लड डिलीवर करते हैं. It usually occurs in the people with an infection from an virus, parasites and fungus. मैक्सिमम जो पोस्टीरियर uveitis है वो किस लिए होता है? ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, parasites and fungus, and it also occurs in sometime in person with the immune suppression. मतलब ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी जिनका इम्यून सिस्टम लो है, ऐसे पर्सन में ये जो टाइप है पोस्टीरियर uveitis, ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड इट टेंड्स टू बी मोर सीरियस दैन द एंटीरियर uveitis. ये
एज कम्पेयर टू एंटीरियर यूवीआइटिस ये मोस्ट सीरियस फॉर्म होता है बिकॉज इट कैन कॉज स्कार फॉर्मेशन इन द रेटिना, क्योंकि ये क्या करता है, रेटिना में स्कार फॉर्मेशन करता है एंड विच लीड्स टू सीवियर विजन लॉस. Posterior uveitis, in this the inflammation include the retina and the choroid, so it is called chorioretinitis. Next, last one is pain uveitis, all part of the eye. When the inflammation affect all major part of the eye, it is called pain uveitis, and it involves a combination of features and symptoms of all three types of uveitis, that is anterior, posterior and intermediate. So here the pictures of different type of uveitis. First one is anterior uveitis, second one is intermediate, third one is posterior, and fourth one is pen uveitis. Next we will talk about the causes. The first cause is inflammatory disorder, for example ulcerative colitis, Cone disease, inflammation of outer coating of the white portion of eye. Next one is immunosuppressive disease, for example HIV, or if person having immune system weak immune system, so also there is a chance of arising uveitis. Infectious agent like staphylococcus, meningococcus, pneumococcus, herpes simplex virus, syphilis, Lyme disease can also cause infection in the uvea and cause posterior uveitis. Septicemia, sometime infection which is present in the blood can also cause infection in the eye. Sometime eye injury, any type of trauma to the eye can also lead to uveitis. Smoking can also increase the chance of getting uveitis because it suppress the cell function and also diminish the nerve supply. It also diminish the nerve function as well as cell function. Hypersensitivity reaction or sometime any type of allergic reaction can also cause the inflammation in uvea. And autoimmune disorder, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है जो कि उन पर्टिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन के जो भी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. सो दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ यूवीआइटिस. नेक्स्ट वन इज़ पैथोफिजियोलॉजी. यहाँ पे दो पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताया है. सो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ये है, देन सेकेंड वन इज दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. So due to all the etiological factor, there is allergic reaction or infectious agent introduced in the eye, then it cause irritation and itching to the corneal area. सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या किसी भी इन्फेक्शियस जो भी एजेंट है वो हमारे आइस में इंट्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो हमारे कॉर्नियल एरिया में ईचिंग और इरिटेशन अराइज करते हैं. नेक्स्ट, एलर्जिक रिस्पॉन्स टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इनटू द आई, जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से आइस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है विच कॉज इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द यूविया एंड विच कॉज लैक्राइमेशन, पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया सिम्टम्स अराइज दैट लीड्स टू यूवीआइटिस.